Hello students, so in the today's session, we'll be starting it with the paper 2 microprocessor 8085. All right. So guys, what do you mean by exactly microprocessor? Okay, so from the scratch we'll be learning it that in our curriculum or in our 12th standard syllabus, what do you mean by a microprocessor or what do you mean by the microcontroller? So these things are there in our syllabus. All right, so there are multiple variations are there in the microprocessors like 8085, 8086, 80286, 386, 486. Then it comes the Pentium and many more things like Celeron, Xenon, like that. Okay, so these are the different types of the versions, like what are the different variations of the microprocessors. But what do you mean by exactly microprocessor? Okay, so would anyone like to answer that? What do you mean by microprocessor? If yes, say yes. If no, straight away you can say no so that I can continue. Yes, anyone would like to answer it? I guess no one is saying it. Okay, fine. So guys, see, microprocessor is nothing but it is sort of a semiconductor as well as it is a programmable logic devices there. So that device is reading the instructions. So the instructions which will be in the binary forms, which we call it as a machine level language. Okay, and that is getting stored into the storage device, which we call it as a memory. So that memory is accepting the binary data as the input one, as the input version, and it is processing the data inside the memory, and straight away, according to the procedure, whichever the inputs are being sended, according to that the output is being sended in the output devices. So in short, if I say it in a very short term, whichever the instructions the user is going to go give you, okay, so that instructions are going to be accepted by the system, gonna processing it, and straight away it will be gonna throwing it out the output on the output screen. So such sort of a functioning is being done by the microprocessor. Okay, so now if you might be thinking that microprocessor 8085 क्या है फिर, so guys 8085 है या 8086 है and etc etc, so many versions are there. Okay, so we'll be seeing it now step by step. I won't be telling you right now in the bulk all the things. Okay, so these are nothing but the different sort of versions are there. All right, so like if I say that microprocessor and microcontroller. Okay, so guys, don't get confused between this term. What do you mean by the microprocessor or what do you mean by the microcontroller? Because these both are the different terms, and many of the students get confused in the board exam because these both the questions are being asked in the board exams, and which that too is of a 3 marks. Okay, so 3 marks के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है. So the thing it's like कि both are having the same priority. So microcontroller is inside the microprocessor. Okay, and microprocessor is a functional unit is there. So now I hope everyone is there. No one is sleeping. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. fine. All right. So yeah. Uh, yes. Just 1 second, guys. Yes, so sorry for interruption. So yeah, so microprocessor 8085 is a unit where 8085, as you can see it on the screen, it is a 8-bit microprocessor. Okay, so guys, I would like to show you one thing. Yeah. So one important basic thing over here in the microprocessor is that microprocessor is consisting of multiple registers. Okay,
And the registers are having the variations like accumulator, then B register, C register, and so on. So over here, guys, if you see it, the term resistors is different, which is the physics में ये term आपने सुना होगा, which is opposing the flow of the current, and resistors, this is the different one. So guys, resistors मतलब क्या है? Which is opposing the flow of current, so which is not here in the CS. Okay, so registers मतलब क्या होता है यहाँ पर? So registers are nothing but which will be gonna store something. So store something मतलब क्या? So it will be gonna store the value which will be in the form of a hexadecimal format. So कोई भी value जब हम लोग microprocessor में store करते हैं, so that value is being denoted in the programming it as a example 34H, जैसा अभी मैंने लिखा है. So that H is denoting as a hexadecimal, and 34 is nothing but the normal value, that is nothing but 3 is 0011 and 4 is, I hope you know this binary level language, that is a 0100. So like registers is gonna store the value which will be in the form of a hexadecimal format. Okay, so guys, like quickly overview if I say it about the microprocessor 8085 is that only and only on the basis of this registers will be performing the programming as well as the theoretical part. So you should be clear with what do you mean by exactly the registers. Is it clear? No, don't worry, this all these things will be gonna in the depth only. I'm just giving you the overview what is exactly in this gonna chapter is the microprocessor 8085. Okay, don't do any sort of a scribbling, guys, on the screen. Yeah. So one more thing I would like to share with you like is microprocessor 8085. I hope इसका weightage कितना है पता है आपको, guys? First chapter weightage. The first chapter weightage is like around 18 marks ka weightage hai, and the second chapter is having the weightage of a 44 marks in the board exam. So that's the reason I have started the session with the second paper. That means you will be scoring the more and more marks, like you will be having a bulk of knowledge initially, because most of the time like abhi paper one almost everyone have done it, and C++ you are doing it from the 11th standard, so that's why it's not at all new thing for you. Yes, Sahil, correct. So, like, yeah, over here in the registers now, as I have told you, that it is going to store the value in the form of a hexadecimal format. Okay, guys, so are you aware what is the exact hexadecimal value for each and every number? Like, if I say it as a C4H, इसका क्या है hexadecimal value? Can anyone tell me? Anyone? 1100 0100. Perfect. Yes, correct. सो 1100, सो ये कैसे मिला? सो कुछ बच्चों को आई गेस अभी भी डाउट रहेगा कि ये 110 कैसे आया. सो गाइज दिस इज बीइंग कमिंग विद द हेल्प ऑफ द 8421 सीरीज, इसको हम लोग कहते हैं, विच यू हैव डन इट अर्लियर ऑल्सो इन द 11th स्टैंडर्ड. ओके, बट स्टिल क्विकली रिकैप, आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली दिस 8421 सीरीज वर्क्स. सो लाइक सी इज नथिंग बट विच वी कॉल इट एज द 12. सो ये कैसे पता चलेगा? सो द थिंग इज लाइक 0 से लेके 9 तक अपना सीरीज होता है, राइट? एंड मैथ्स में 9 के बाद होता है 10. Yes or no? But in the computer, after 9, it is having a A. Guys, always keep it in mind. Everything will be in the uppercase. ठीक है, microprocessor में. But see, if I compare with the C++, तो C++ के programming में everything will be in the lower case. So ये purposely मैं दोनों track साथ में बता रही हूँ, so that you will be having a alertness of each and every programming language, then whether it may be the C++ or whether it may be the assembly programming language. ओके, सो जो अभी माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जो हम लोग पढ़ने वाले, सो दैट इज द असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज.
ऑलराइट. सो गाइज 0 से लेके 9 तक नॉर्मल सीरीज रहेगा, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 9. एंड आफ्टर 9 इट कम्स द A, then it comes the B, C, so on till it moves on till the F. So F is nothing but my 15th number is the, जिसका बाइनरी नंबर होता है 111. आई होप ये सबके पास चार्ट है 11th स्टैंडर्ड का. Yes, ma'am. ओके. सो is there anyone who is not having any मैम single student? किसी के पास भी नहीं है तो भी बोलो yes. मैम नहीं है मेरे पास। ओके फाइन, ठीक है. जस्ट बी ओपन, डोंट हेजिटेट. ठीक है, किसी एक भी बच्चे के पास नहीं है तो भी बताओ, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इन दिस सेशन, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल शुड बी स्कोरिंग इट 185 प्लस इन दिस सब्जेक्ट. आई डोंट वॉन्ट दैट कि अरे हाँ इसने 150 लाव या 140 लाव या इसने 190 ही लाना चाहिए, लाइक दैट. आई वॉन्ट एवरी वन शुड स्कोर 185. सो इवन इफ यू don't know such silly things also, please open it. Okay, share all the things with me. Yes, yes, Jacob, you need to write the answers, like notes and all. ठीक है, जो भी मैं अभी simultaneously बता रही हूँ, you can write down. I hope everyone is sitting with the paper and pen, ना. सिर्फ सुनने का और देखने का काम नहीं हाँ करना मैम। है. Yes, हाँ. So yes, so like number series is 1 is 0001. ये भी ये कैसे आया? So guys, with the help of the 8421 series. So जिसमें अभी 1 जो है, इसमें addition 1 कहाँ पर होता है? इसके नीचे ही 1 है ना. So वहां पर ही मुझे 1 लिखना है, और else otherwise rest everywhere I'll be writing it the 0. So in this way I'm getting the binary form for the 1 with the help of the 8421 series. ओके इसके लिए इसका आंसर जो है ये 1 आया यहाँ पर. अभी इफ आई वांटेड द बाइनरी नंबर फॉर 2, तो 2 कैसे मिलेगा? सो इस यहाँ पर देखना है 8421 सीरीज में 2 है क्या? यस इट्स दैट. तो 2 के नीचे ही 1 आएगा, बाकी सब जगह पे रेस्ट यू विल बी राइटिंग इट द 0. ओके, सो दैट आई विल बी गेटिंग द बाइनरी नंबर एज अ 0010. ओके, नेक्स्ट इज 3. सो 3 अभी इसमें एडिशन कहाँ पर होता है? यस द एडिशन इज 2 + 1. ये सुनो, तो 2 + 1 मतलब 3 हो गया, तो वहां पर ही 1 आएगा, बाकी जगह पे 0 0. आई होप एवरीवन इज क्लियर. जिनको आता है इट्स वेल एंड गुड, उनका Yes, रिविजन ma'am. हो रहा है, बट जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं बता रही हूँ. अभी 4, तो यहाँ पर 4 प्रेजेंट है. सो जिस जहां पर 4 आया उसके ही नीचे आई विल बी राइटिंग इट 1. ओके, नाउ यर फ्रॉम यर इट्स स्टार्टिंग इट लाइक 5. सो अभी यहाँ पर 5 का एडिशन होता है. यस 4 + 1. तो 4 + 1 मतलब 4 के नीचे ही 1 आएगा और 1 के नीचे 1 आएगा, बाकी रेस्ट एवरीवेयर इट्स अ 0. So in this way you will be generating the binary forms. Okay, so 6 का क्या आता है? 0110. So now it's my by hearted, so I'll be quickly writing it. Okay, 7 is like 4 + 2 + 1. Now 8 is, so you'll be having 1000, and then so on like 1001. ये भी एक ट्रिक है, तुम याद रख सकते हो. अभी 9 के बाद guys आता है A. So that means A is nothing but what? It's nothing but the mathematics. We call it as a 10. So that means 1010, 10 ka 10 10. Then B is nothing but I'll be calling it as a 11. So it's 10 11. All right. So in this way also you can by heart it. या फिर अभी ये 11 है, so 11 यहाँ पर देखो कहाँ पर एडिशन होता है. So 8 + 4 होता है क्या? नहीं होता है, that is 12. So 8 + 2 + 1. yes or no? So 4 के नीचे ही 0 आएगा, बाकी जगह पे 1 1. Getting it? So in this way I'm getting the resulted for the B, that is 1011. All right, so I hope everyone is clear. Like अभी further क्या आएगा? C D E F. Everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. So C is 12, so it's nothing but the 1100. Then D, it's nothing but the 13. So क्या आएगा? 1100 है, तो this is 1101. Then E is 14, so 1110. correct, 111.
0 and the last is very simple, f मतलब आता है 4 4 times 1. 1. Perfect. So guys, you can take a screenshot of this thing from your screen, so that this is nothing but we call it as a binary level, okay, of numbers. Binary level language कहते हैं इसको. All right, yeah. So this will be gonna helpful for you in while calculating it, क्योंकि 5 marks के this year it will be gonna 4 marks minimum है, 5 marks maximum है. So 4 to 5 marks के तुम लोग को calculations आने वाला है. So calculations, numericals it will be gonna there. So in that numerical, if you are by-hearted with this thing, then only you will be able to do the, you will be able to solve the problems. All right. So at that time, this will be helpful for you. Okay, so now next thing is, guys, I hope everyone is with the textbook, so you can open the page number 192. Hopefully 192 here. नहीं, sorry, 181 है. 181 in your textbook. ठीक है, जिनका नया textbook है उनके लिए 182 रहेगा. Okay. So 181 या फिर 182, you will be seeing the advancement of the microprocessor generation देखोगे आप. Okay, that is the evolution of a microprocessor. मैम वो टेबल है ना जो? Yes, yes, perfect. That's the table. ओके. Yeah. So guys, over there, अभी वो जो table है, that is nothing but the Ma'am. first generation. Yeah. बोलो. मैम वो बुक डाउनलोड करने को मिलेगा ऑनलाइन? I need to check it रहेगा, but mostly I'll be suggesting you that purchase the hard copy. It would be better for you, beta. No, actually I have it, but I am at my hometown, so I don't have it at me right. Oh. Okay. Ma'am, ठीक है. even I, हाँ. बोलो बोलो. ma'am, even I am at my hometown, so even I don't have my textbook at the moment. Okay, so what I'll be, you don't have the what we say, TPS भी नहीं है आपके पास? At least textbook नहीं तो TPS तो है. Topic wise paper solution एक textbook आता है, या वो भी नहीं है? नहीं मैम. ठीक है, I'll just look it and chapter wise I'll be sending you the PDF in the groups then accordingly. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. या जो भी आपको चैप्टर का चाहिए वैसे बता दो फिर. Okay, yes, Dolly will send you. Thank you so much, Dolly. I guess Dolly, you are having the third chapter also, right? Okay, fine. ठीक है, I'm having the PDF of C++ chapter also, third chapter, so I'll send that to you. Okay, yeah. So guys, next thing is like once again back to the topic. So as 181 पेज पे जो है, ठीक है, अभी जो भी मैं important बता रही हूँ, you will be writing it with the सब note down करके लो. ठीक है, दिमाग में storage, I am sure that it won't be gonna sustaining for a longer period because short term memory है सबका, right? So like first generation, second generation, third, fourth, fifth generation, ये जो table है, ठीक है, ये table board exam में नहीं आने वाला है. So तुम लोग को you no need to do such sort of a practices and tables and all. What you need to do it, इसके ऊपर एक question पूछा जाएगा, which will be gonna only theoretical questions will be there. So एक question है, I hope you will be writing it. I'm dictating the question. Write down. Compare second generation. Compare second generation and fifth generation. Again, I repeat, compare second generation and fifth generation microprocessor. Yes, 3 marks. ओके गाइस, हम फर्स्ट चैप्टर का जिनको भी जिनके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है, सो दे कैन सी द PDF फाइल. ऑलराइट, इट्स बीइंग अपलोडेड बाय सार्थक in the group. Okay, thank you so much, Sarthak.
Yeah, so this is the 3 marks question. Okay, so guys, now don't be specific only with the second and fifth generation. You need to read the first also as well as the third and fourth also. But the thing like ये sort of में ये pattern में आपको question पूछा जाएगा. So इसका जो answer है, you'll be getting it in the TPS. If you're not having it, just let me know so that I'll be uploading in the group. Okay, I'll be sending you the answers accordingly, step by step. ठीक है, सो पहले थोड़ा स्टडी करो, अभी तुम लोग के पास पीडीएफ तो आ गया है, सो फर्स्ट यू विल बी go throughing all the things from the textbook like first chapter ka, and then step by step we'll be solving all the things. Okay, एंड इसका आंसर जो है वो सिर्फ टीपीएस में से ही पढ़ना है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, सो उसमें से नहीं पढ़ना है, मेक श्योर ऑफ दिस थिंग. ओके, ऑलराइट. टीपीएस नहीं है तो ठीक है ना, आई विल सेंड यू द आंसर्स, डोंट वरी. ऐसे ही सॉफ्ट कॉपी जैसे अभी आपको पीडीएफ मिला है ना, वैसे मिलेगा. ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा. ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 184 इन योर टेक्स्ट बुक. Yeah, so now the first thing is like, what do you mean by the registers? So as I have told you earlier also, registers matlab kya hota hai guys? So registers is nothing but which will be gonna store the value which will be only and only in the hexadecimal format. So this was given the example hexadecimal ka format. ठीक है, so guys 1 mark के लिए question पूछा जाता है board exam में. Explain the term register. 1 mark. Again, I repeat, explain the term register. 1 mark. Okay? जो भी मैं important बता रही हूँ, I hope simultaneously लिख रहे हो, because I won't be typing that thing. जो भी questions important है, I'll be dictating thing. सिर्फ explanation वाला part है, वो type होगा screen पे. ठीक है? Okay, done. इसका answer जो है, so register क्या है? So register is nothing but which will be gonna store the value in the form of a hexadecimal format. ठीक है, इसका आंसर भी चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में. So मतलब गाइज रजिस्टर्स होता क्या है? So registers मतलब क्या? It's nothing but which we call it as a variables. Getting it? Variables मतलब क्या होता है guys? Another name for the variable is placeholders. Yes or no? As I have writing it over here, variables are placeholders. See, ये सब भी terms important है, ये paper 1 में लिखना पड़ता है ये सब, like during the theoretical while expressing the answers on your paper. So like variables मतलब क्या? So variables are nothing but the placeholders where the value is being stored. So guys, that thing is apart कि value कौन सा store हो रहा है. मतलब मेरा value integer है या character है या long है या double है या float है, whatever है. Okay, so these are the different variations. But ये सब जो है, ये different data types जो है वो कहाँ पर store होते हैं? Variables में. Yes or no? अभी इसके बारे में तो आपको information है, as you have already studied in the 11th standard related to the C++, right? So same variables का जो काम होता है, जो functioning होता है, जो role है, same thing is being done over here, which is known as a registers. Getting the point? सिर्फ नाम अलग है, काम सेम है. समझा? सो सिर्फ तुम लोग को टर्म्स अलग अलग बाय हार्ट करने, बट वाइल कीपिंग इट इन माइंड यू शुड बी क्लियर कंसेप्ट कि अरे हाँ ये दोनों का काम एक ही हो रहा है, बट पेपर 1 में इसको मैं वेरिएबल बोलूंगा, पेपर 2 में मैं इसको रजिस्टर बोलूंगा. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या है? वेरिएबल्स जो है गाइज, वेरिएबल्स में कुछ लिमिट होता है क्या कि लाइक एक ही प्रोग्राम में मैं सिर्फ 10 वेरिएबल स्टोर कर सकता हूँ, लाइक 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या 100 स्टोर कर सकते हैं या 2 ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट. Yes or no? क्यों? Because like there is infinite terms I can use it over there. So there is no limitation for the variables. But guys, if I come towards the paper 2,
Okay, so if I come towards the paper 2, yes, there is a limit. So that means only few or a specific registers or a variables in the term of the paper 1 language. So there are a specific variables or the specific registers which will be gonna implemented in the assembly programming language, which is known as a ALP कहते हैं हम लोग उसको कोडिंग में. राइट अल्गोरिदम के लिए हम लोग लिखते हैं ना, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस के लिए हम लोग WAP शॉर्टकट में यूज करते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में भी होता है. सो सेम थिंग इन द पेपर 2 विल बी कॉलिंग इट एज अ असेंबली लेवल, दैट इज असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ALP, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो ओवर हियर असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिर्फ स्पेसिफिक रजिस्टर्स ही यूज कर सकते हैं. ओके, सो अभी स्पेसिफिक रजिस्टर्स कौन सा है? सो गाइस स्पेसिफिक रजिस्टर्स आर, one is accumulator, okay, this which is known as a register. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? A कहते हैं. Next is B, then C, then D, E, H, L. Okay, so this much registers you have to use it in the programming language. Rest उसके बाद आता है एक temporary register and the another is a flag register. Okay, so only this much registers you will be gonna using it. So I'll show you one by one how it's work. So guys, ये जो है A जो है accumulator है, ठीक है. तो in short I'll write it over here, A, comma B, C, D, ठीक है. सो ए जो है ये हमेशा आइसोलेटेड रहता है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, ये अलूफ है. ओके, बी सी जो है वो कॉम्बिनेशन में रहेगा. उसके बाद आता है डीई. डीई जो है ये हमेशा पैर में रहता है, मतलब कॉम्बिनेशन में. ओके, एंड द लास्ट इज एच एंड एल. ओके, सो इफ आई डोंट यूज अ कॉमा आल्सो वी विल डू. सो या, सो अभी यहाँ पर BC रजिस्टर पेयर है, DE RP है, मतलब जिसको रजिस्टर पेयर कहते हैं, एंड HL. सो दीज आर आल्सो द रजिस्टर पेयर. अभी बचा क्या? तो बचा है मेरा टेम्पररी रजिस्टर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्लैग. ऑलराइट, सो इतने रजिस्टर्स है जो हम लोग को माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करना है. ओके, तो इसके अलावा यू माइट बी थिंकिंग कि अरे LMNOPQRSTXYZ तक, तो ये सारे रजिस्टर्स हम लोग को यूज नहीं करना है. ओके, सो इनवैलिड, आई विल बी showing you the invalid code also. Like invalid code मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने, like MOVH, K. तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि MOV जो है ये इंस्ट्रक्शन है. अभी ये इंस्ट्रक्शन कैसे है तो विल बी सीइंग इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, बट एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ. सो H क्या है? रजिस्टर है. K क्या है? सो K एक नॉर्मल टर्म है बट विच इज नॉट नोन एज अ रजिस्टर. सो दैट मीन्स दिस इज द इनवैलिड केस, मतलब ये मेरा रॉन्ग हो गया. तो बच्चे ये ऐसे मिस्टेक्स करते कोडिंग में लिखते वक्त. So I want that you won't be doing such sort of a mistakes. That's why I'm showing this thing purposely. All right. So yeah. So once again, back to the topic is like accumulator अभी. तो A क्या है guys? Accumulator है. So A को हम लोग accumulator कहते हैं, which will be gonna store the result of arithmetical and logical operations. So guys, जो भी हम लोग का result store होता है, सो वो रिजल्ट कहाँ पर स्टोर होता है असेंबली लैंग्वेज में? सो द रिजल्ट इज गोना स्टोर इट इन द एक्यूमुलेटर. तो कोई भी, मतलब यूजर ने, अभी यूजर मतलब कौन? हम लोग. ओके, सो अभी हम लोग, मैंने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए, लाइक एनी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, लाइक मेरे ऑपरेशंस अरिथमेटिकल हो या लॉजिकल हो, so any operations are being performed that will be storing the result in the register which is known as the accumulator. ओके, तो एक्यूमुलेटर जो है उसका साइज कितना है गाइस? सो एक्यूमुलेटर का जो साइज है विच इज 8 बिट, दैट इज नथिंग बट विच वी कॉल इट एज अ 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट.
Okay, so that means over here 16 bits is equal to how many nibbles? 4 nibbles. So year 2017 18 में I guess, तो ये fill in the blanks में guys पूछा गया था कि how many bits is equal to how many nibbles, like that. So like 1 byte is equal to, I'll be calling it as a 2 nibbles. I hope you'll write this thing in your notes. So 8 bit is equal to 1 nibbles, or else I can also call it as a, sorry, 1 byte, or else I can also call it as a 2 nibbles. So that means 1 nibbles कितना का हो गया? 1 nibble is equal to 4 bits. bits. Perfect. Yeah. So 1 byte is equal to, we'll be calling it as a 8 bits also, as well as I can also call it as a 2 nibbles, and 1 nibble is equal to 4 bits, and 16 bits is equal to 4 nibbles, which is equal to 2 bytes. Okay. So ये अलग से कहाँ पर तो नोट डाउन करके रखो this thing. Yeah. Guys, listen, just 2 minutes break. So the session is getting ended. I'm quickly, within a minute, I'm sending you the new link in the group. Okay, so join it once again. Fine? Okay. Yeah. Yes, ma'am. Okay.